Assalamualaikum everyone, this is Hussein and I'm an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. How are you all? I hope that you all guys must be good and healthy. You must be doing well. And yeah, I may think about that. It's been so long that I haven't uploaded any video, but now I'm gonna upload the video and it's going to be very beneficial for you. Recently, like previously, what did I teach you? I taught should have. Like I taught you should and about the past sentence of should have. So now we are going to move on our new lecture, which is going to be must, and it is also important, and I might tell you the difference between should and must, because we must know the difference between should and must as well. And inshallah in the video I will make you understand that how you guys can make the perfect sentence of must. So till the end you guys are supposed to watch my video, and still if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. You will get the notification of my video by hitting the bell icon. So what do you think? Let's begin our video. So guys, as you can see, I have written definition as well and formation as well, and with the help of both of these I will make you understand that how you guys can make a proper sentence of must and what is the use of must, in which situation we can use this sentence, कि किस situation में कहाँ इसको use करने की ज़रूरत होती है. So firstly we are going to read the definition. We use it for strong desire, strong obligation and strong necessity. So what is the meaning of these all things? कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश होती है, कि इस तरीके से आप कह सकते हो, बट वो जो ख्वाहिश होगी वो बेसिकली वो स्टेट में आप इस्तेमाल करोगे. जैसे कि आई मस्ट हैव अ कार, यानी मेरे पास ज़रूर कार होनी चाहिए, इस तरीके का आप कहते हो. सो इन दिस वे हमने शुड में पढ़ा था कि मेरे पास कार होनी चाहिए, बट when we emphasize, when we force, when it has some strong desire, हमने जब strong desire की बात करते हैं, ये basically strong की बात करता है. should और must का difference यही है, इसमें obligation भी है should में भी, उसमें desire भी है और necessity भी है. but what is the difference कि ये सारी चीज़ें जो बात करते हैं वो ज़रूर होना चाहिए, यानी उसके पास कार ज़रूर होनी चाहिए. he must have car. I didn't write the formation, like I didn't write the formation of state, but I have just written in action, but I will write in state as well, and I will give you the some sentence of state. Fine. So strong desire, जैसे कि you must have a board marker, या I must have a wonderful bag, in this way. Or obligation, like in obligation there are some obligation farais, that you must perform 5 times namaz, you must go to take online classes, you must take online all the classes, or you may say you must obey your parents, तुम्हें अपने parents का ज़रूर कहना मानना चाहिए. we can use in चाहिए, it's okay, but ज़रूर, when we emphasize something, when it has some strong commitment, so then we use it must, that you must do that, तुम्हें वो ज़रूर करना चाहिए. Fine. So and strong necessity, जो काम ज़रूरी है, for necessity जो काम ज़रूरी है, जैसे कि you must take proper breakfast, आपको ज़रूर यानी अपना क्या नाश्ता लेना चाहिए, यानी अच्छा नाश्ता लेना चाहिए, प्रॉपर लेना चाहिए. And you can say in this way, if you wanna learn, if you wanna be a good speaker of English, so you must take proper class of English, कि तुम्हें ज़रूर proper class लेनी है English की. you must leave the class, you must take so many gaps of the classes. In this way you guys can make. Now let's move to the formation, then you will get the more idea, and which form of verb you can use it, so you will get the more idea. Over here is a formation. It's affirmative, it's interrogative. Why I didn't make in it's negative, sorry, I have done this mistake, it's negative. Why I didn't make an interrogative, actually the sentence can be considered, sentence को consider किया जाता है, but there is no sense of this sentence. We never prefer to say this sentence, so that's why I didn't prefer to write. I just wrote 2 sentences, affirmative and negative. जैसे कि affirmative sentence, positive sentence, तुम्हें अपना काम ज़रूर वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए. You must complete your work on time, तुम्हें
यू कैन से मोर सेंटेंस लाइक तुम्हें फेसबुक इस्तेमाल, तुम्हें ज़रूर यानी फेसबुक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आपने इस तरीके से बोला नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट यूज़ फेसबुक, बट यहाँ आपके लिए ज़रूरी है, आप ज़रूरी मेंशन नहीं कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप ज़रूरी को मेंशन करो, मगर जहाँ व्हेन यू आर नॉट मेंशनिंग दैट कि तुम्हें यानी इन एग्ज़ाम्स यू मस्ट नॉट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, यानी एग्ज़ाम के दरमियान आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस वे यू गाइज कैन मेक, आई हैव मेड इन नेगेटिव, बट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इट वाज स्टेट, मैंने ऑलरेडी स्टेट के बारे में बात करी है जो कि बी था और हैव था। मैं डायरेक्टली आई विल मेक जस्ट ओनली इन अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड नाउन. I hope that you guys must be able to see, and subject plus have, sorry, must you guys are going to put must plus have plus object and noun. So how you can make the sentence, what is the sense of this sentence, इस sentence का sense क्या है? जैसे कि आप देखते हैं किसी को, आप पूछते हैं कि यार क्या वो डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर, सो व्हेन यू आर श्योर या ही इज अ डॉक्टर, ही मस्ट बी डॉक्टर, सो देन यू कैन से या ये डॉक्टर है, इसे डॉक्टर, यानी आप ये भी कह सकते हैं इसे डॉक्टर होना चाहिए. सपोज इसमें मोर कंडीशन कैसे आ सकती हैं, दैट समवन इज वेयरिंग द वाइट कोट like who wear like doctor wears, so when you are not getting sure but when you have seen him in the clinic, so you can say yeah he must be a doctor, that's why he is wearing the white coat in this way. और इसके अलावा जो गाउन जो टीचर्स पहनते हैं, so someone is wearing gown, so you might consider him or her, then yeah he must be a teacher because he is wearing a gown. in this way आप कह सकते हो. और आप ये कह सकते हो कि I am uploading video on YouTube and you can say yeah I saw him on YouTube, he must be a YouTuber. in this way कि वो ज़रूर यूट्यूबर होगा या ज़रूर उसको यूट्यूबर होना चाहिए. सेंस आप ज़्यादातर अब कभी कभार कुछ सिचुएशन में डायरेक्टली आप उर्दू को चेक नहीं करते हो, आप कभी कभार सिचुएशन को भी समझते हो, ठीक है. नेवर गो टू ट्रांसलेट डायरेक्टली उर्दू टू इंग्लिश, सम टाइम यू नीड टू थिंक इन इंग्लिश एंड डायरेक्टली स्पीक इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, ठीक है. और इसमें आप इस सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम यू मस्ट हैव प्रॉपर स्टेशनरी, यानी एग्ज़ाम्स के दौरान आपके पास आपका ज़रूर प्रॉपर स्टेशनरी होना चाहिए. और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि when you are going school you must have every subject copies, यानी आप जब स्कूल जा रहे हैं तो आपके पास ज़रूर सब सब्जेक्ट की कॉपीज़ होनी चाहिए. और you may say in this way that when you are going in the office, whenever you are going somewhere, so it may say you must have your own mobile phone, but we might need someone to call to inform them, it might be some emergency as well, so you must have your mobile phone with yourself or with you. Fine, in this way you guys can make the sentence. इसके must के जो simple sentence, you must have geometry, you must have a bike, you must have a bag, in this way you guys can make. Or the sentence of this, you must be good, you must be tall, you must be happy, you must be healthy, you must be energetic, you must be apologetic. in this way you guys can make this sentence. और इसका negative you must not be, इस तरीके से must you be, actually the sense is not coming, that's why I didn't prefer to teach you in interrogative. आप इंट्रोगेटिव में कंसीडर कर सकते हैं, बना भी सकते हैं. जो फॉर्मेशन होगी मस्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, बट द सेंस विल नॉट कम, दैट्स व्हाई आई डिडंट प्रेफर टू टीच यू. Till over here, I hope you must have got the actual concept of must, and in starting I think I informed you the difference between as well. It talks about strongness. ये strong किसी चीज़ की बात करता है, desire, obligation. वो जो थी वो strong नहीं थी, वो आपको करना चाहिए. जैसे कि एक लास्ट एग्जाम्पल पे बात ख़त्म करूँगा. लोग कहते हैं कि आपको यानी नमाज़ पढ़नी चाहिए, बट आप इन दिस वे में कह रहे हो कि यार तुम्हें 4 रकात नमाज़ पढ़नी चाहिए. सपोज 4 रकात 5 नमाज पढ़नी चाहिए, बट आई वुड से दैट यू मस्ट परफॉर्म ऑल द रकात ऑफ नमाज इन दिस वे. यू मस्ट परफॉर्म ऑल द रकात, यू मस्ट परफॉर्म 5 टाइम नमाज इन दिस वे, ठीक है. लोग कहते हैं कि यार तुम्हें 2 सुन्नत पढ़नी चाहिए, बट आई वुड से दैट यू मस्ट परफॉर्म 2 नफिल एज वेल.
to Nafil as well. Fine. So inshallah, I hope you must have got the idea and you must have got each and everything. So inshallah, we will meet in next video where you will be taught about the past of Mas. In this video, I have taught you in present, but we have the past of Mas as well. So in the next video, you will be taught that. If you have got it and if you are happy with my video, so please do comment if you want to ask anything. And I would say the same as I said in the starting, that if you like my video, so press the bell icon and you will get the new notification if you hit the bell icon. And inshallah, we'll meet in next video. Take care of yourselves and subscribe my channel as well.